The Ranganatha Ashtakam. This is a devotional hymn and an ashtakam or an octet composed by Adi Shankaracharya, praising Lord Ranganatha, a form of Vishnu, as depicted in the grand temple at Sri Rangam, describing his blissful cosmic form resting on Anantasesha by the Kaveri river and invoking devotees' minds to find solace and liberation by contemplating this divine image fulfilling all desires. The key aspects of this Ranganatha shloka is that the composer is Adi Shankaracharya on deity Lord Ranganatha, the reclining form of Vishnu, a major deity in Sri Vaishnavism, and the location of the verse captures the essence of Sri Rangam Ranganatha Swami Temple, the largest functioning Hindu temple complex, and the content. The verse describes Ranganatha's divine attributes, such as his form of pure bliss, Anantarupa, true knowledge, Jnana Rupa, resting on the serpent or the snake, Adisesha, and his presence on the Kaveri river banks. The purpose of chanting this shloka is believed to grant all desires and lead to liberation, which is moksha or sayujya, by absorbing one's consciousness with the Lord's essence, especially when recited in the morning. Example verse. Let my mind reveal in the form of Ranga, whose form is the epitome of happiness, whose form is the true knowledge, whose form is as told in the Vedas, and who is of the form of the comforting moon and beautiful. In essence, the Ranganatha Ashtakam is a powerful prayer for spiritual fulfillment, focusing on the magnificent, ever present form of Lord Ranganatha. Now, shall we recite this shloka? श्रीरङ्गनाथाष्टकस्तोत्रम् आनन्दरूपे निजबोधरूपे ब्रह्मस्वरूपे श्रुतिमूर्तिरूपे शशाङ्करूपे रमणीयरूपे श्रीरङ्गरूपे रमतां मनो मे कावेरीतीरे करुणाविलोले मन्दारमूले धृतचारुकेले दैत्यान्तकाले अखिललोकलीले श्रीलङ्गलीले रमतां मनो मे लक्ष्मीनिवासे जगतां निवासे हृत्पद्मवासे रविबिम्बवासे कृपानिवासे गुणवृन्दवासे श्रीरङ्गवासे रमतां मनो मे ब्रह्मादिवन्द्ये जगदेकवन्द्ये मुकुन्दवन्द्ये सुरनाथवन्द्ये व्यासादिवन्द्ये सनकादिवन्द्ये श्रीरङ्गवन्द्ये रमतां मनो मे ब्रह्मादिराजे गरुडादिराजे वैकुण्ठराजे सुरराजराजे त्रैलोक्यराजे खिललोकराजे श्रीरङ्गराजे रमतां मनो मे अमोघमुद्रे परिपूर्णनिद्रे श्रीयोगनिद्रे ससमुद्रनिद्रे श्रुतैकपत्रे जगदेकनिद्रे श्रीरङ्गभद्रे रमतां मनो मे सचित्रशायी भुजगेन्द्रशायी नन्दाङ्कशायी कमलाङ्कशायी क्षीराब्धिशायी वटपत्रशायी श्रीरङ्गशायी रमतां मनो मे इदं हि रङ्गं त्यजतामिहाङ्गं पुनर्न शाङ्गं यदि शाङ्गमेति पाणौ रथाङ्गं चरणे भुगाङ्गं याने विहङ्गं शयने भुजङ्गं रङ्गनाथाष्टकं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वान् कामान् अवाप्नोति रङ्गः सायुज्यमाप्नुयात् गुरुवायूरप्प शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते गुरुवायूर्पुर श्रीहरिकृष्ण नारायण
गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधरे नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधरे नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि 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 नारायण गोपाल मोहन मुरलीधरी श्री हरि नारायण गोपाल मोहन मुरलीधरी श्री हरि नारायण गोपाल गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि नारायण गोपाल गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण नारायण गोपाल गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधरे नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधरे नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि नारायण गोपाल मोहन मुरलीधरी श्री हरि नारायण गोपाल मोहन मुरलीधरी श्री हरि नारायण गोपाल गोवर्धन गिरिधारी मुरारे नारायण गोपाल गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल नारायण गोपाल श्री हरि 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 नारायण गोपाल गुरुवायूरपुर श्री हरि कृष्ण